पहले आप अपनी रेफ्रिजरेटर को खोलो कि उसमें आप क्या क्या पड़ा है. आपके पास न्यूटेला होता है, पीनट बटर, योर केचप्स, योर फ्रूट जूसेस. सेकेंड इज मल्टीविटामिन आपको देने की. Until unless they are not deficient, you don't need to give them a multivitamin. Gummies, they are more of the sugars. जंक का हॉर्मोन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है. Surely, बिल्कुल पड़ता है. प्रोटीन पाउडर्स के दे रियली सोक योर वाटर. Nobody tells them this thing ना कि okay, if you're taking a lot of protein, with that you need to drink a lot of water. 20 मिनट हो गए, अब आपके हम मील्स उठा रहे हैं. They cannot stay hungry. Nobody can stay hungry. True, undoubtedly. Right? Yeah. ये नहीं खाएंगे तो कुछ और तो खाएंगे. Hello everyone, welcome to Shine with Swati podcasts, and today we have Miss Pooja Munjal, and this is the name you relate here with nutrition and not just nutrition and dietitian, to be honest. I really call her food doctor because I think she believes in treating people through just having the right food. I mean, that's amazing philosophy in itself. So Pooja ji, let's just roll, you know. That's मुझे ये पूरा थॉट प्रोसेस ही बहुत अमेजिंग लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब हम कुछ तो बॉडी में गलत डाल रहे हैं, कुछ समथिंग वी आर रॉन्ग, और वो क्या रॉन्ग का जगह राइट हो सकता है, सो दैट वी कैन डील विद इट. तो यही चीज़, ये रूट कॉज जो है ना, हम लोग मिस कर जाते हैं. एंड आई ऑल टू वांटेड टू शेयर, स्टार्ट विद माई ओन पर्सनल स्टोरी, हाउ व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट मी टेल यू, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन द सिटी, एंड I was, very lean before, once I got married, and I gained a lot after my first conception. That was 9 months bed rest. And अपने आप से what I was doing was just skipping dinners and all. I thought नहीं, वो health को नहीं set बैठ रहा. Then I came to her and what the plan she gave me, I said ये तो मेरे normal diet से ज़्यादा है. And I was like, यार ये तो मैं खा के और मोटी हो जाऊंगी. But then I ate more and I ended up losing weight. So that was amazing. And I had back glowing skin and the back great hair. So I was like, okay, so that's the power, of having the right food. So without making much delay, so this, because आपका जो spectrum है, that is very, very diverse. You can cater to, be it moms or kids, and then patients from diabetes and all that, ठीक है? So right here today, we will more focusing on nutrition of our kids basically, और एक mom किस तरह से अपने बच्चे को पूरा good nutrition दे सकती है, और वो क्या क्या challenges generally face करती है. So coming up with the first challenge, that is कि जनरली जो है ना, हम ममाज जो हम भी और क्या सुनते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही पिकी ईटर है. सो वट उसमें क्या है कि बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं अच्छे से मिलेगा. बट द थिंग इज़, वट आई ऑलवेज फील इज़ कि वो पिकी ईटर क्यों है. वी शुड एक्चुअली गो टू द रूट कॉज. True. राइट. सो बट So picky eater. Okay, so that's again a terms I think invented by moms only. Okay, my child is a picky eater. Why? Because maybe we are forcing them. We don't give them a space. Maybe they don't want to eat that time that particular kind of a food because they're kids. Right. So it has to set up, Swati, in the foundation years only. When we talk about the foundation years, it starts from 1 to 5. 1 to 5 years of age. Right. So 1 to 5 years, it's not only they start going to the school, they are making all kind of an interactions. They're making the relationship. They're understanding mom, dad, my uncle, my aunt. In the same way, they are making a relation with the food. True. How we are treating that time, that's very important. That foundation. That time. meal time. Yeah. That's when we are feeding them in front of the TV. So that means we have already distracted them. True. We haven't told them, okay, this is how they are important. Yeah. Feel it, look at this, and eat it. The thing is, yes, we all complain कि हमारा बच्चा स्क्रीन के आगे खाता है. हाँ. But then Who वो introduced screen it? introduced I this always thing. tell this thing कि okay, who introduced all these things, right? Yeah. We mothers. So that time, then you need to be like really patient. Yeah. Have a lot of patience and talk to your child and let them play with the food and let them eat the food, let them feel it. ठंडा है, गरम है, color कौन सा है? True. Right? And that's the way slowly, gradually they will develop. Maybe they will not like the taste at the first go. Yeah. But 1 or 2 times when they are like full about
40% they are full. Yeah. Then you can introduce the new food rather than introducing at the time when they are completely hungry. They are looking for their comfort food. True. Right. So that's how that picky eater, they will start eating the food. They become a better in their eating. It's not you, they run, I run after them to feed them, or the maid or our helps are Yeah. running after them. True. So you will see how they start changing. They will start eating the food. कुछ ना कुछ तो पसंद होगा. Yeah. ये नहीं हो सकता कि वो राइस भी नहीं खाता, वो रोटी भी नहीं खाता, वो ये भी नहीं खाता, चीला भी नहीं खाएंगे, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे, ओनली दे आर फीडिंग ऑन देयर चॉकलेट्स. So make that time. Picky eater, one point is, please switch off your TV, switch off your phones, let them feel the food, come on the dining table the way we used to do it. Sure. Dining table पे लेके आओ, let them see the food, let them feel it, eat it. Second case, there should not be, nobody should be running around, and give them a time limit also. Give them a time limit. That's Yes. very important. Right, Right? that's very important. Yeah. Whenever you're eating or whatever you're eating, tell them ki this is the way they have to eat it. And third, very, very important, when you are going for your grocery or when you're going for your vegetable shopping, take them along. Take them along. Take them Involve along. them. Involve them. Let them see, okay, how to do it, how to pick up the vegetable. Once they start growing after the 5, then we can Yeah. tell them how to read the label. Right. At least we will just tell them with the numbers. Okay, if there is so much of a number list, so you should not be picking it. Right. So this kind of a things we can just tell small children, like live food, they are dead foods. We can just introduce all these things. So it's very easy to introduce this. How much we want to put that effort. It is that वही आ जाती है बात. आई गेस वी वांट कि बच्चा आए और 10-15 मिनट में अपना खाना खाए और वी आर मॉम गो टू द नेक्स्ट So थिंग see, टू डू. that's only the mother's comfort. Yeah. So basically हमारा comfort ही है जो बच्चों को then it is. Yeah, we have to just be more patient. Yeah. At the same time, discipline them. It's initial years. Yeah. So basically अगर हमने टेबल पे कुछ लगाया and the kids say ये तो मैं खाता नहीं हूँ. So we should be like कि See, I never say कि उठा दीजिए. Let's respect them, but not to everything. Give them a logical reason. Right? If you give them a reason, and already if it's a new food we are introducing to just a toddler, right? So that time we need to be like more patient, and let's see if they are eating it. If they're not liking it, maybe they are not liking the taste, then Right. we can introduce them back after some time. Yeah. So the first thing is remove all your screens and distractions. Definitely. Do not force feed. Not at all. Yeah. And second is have meal time. जैसे कि 20 मिनट ही रखा खाना. 20 minutes where they can finish there. Let them tell them कि let's chew the food. Let's not take the water along with this. Right. Until there is no requirement. Right. हम लोगों ने finally एक environment बनाना है. Exactly. Where they can learn a relationship with the food, because this is what they are going to carry in their future. True. बिल्कुल सही. तो वही. And अगर वो 20 minutes में खाना नहीं खा रहा है तो it's better. We can pick up the plate and maybe tell them कि okay, now they have to rest. That time they will start clinging on you. Yes. Right? But that's okay. We can just tell them कि oh बच्चे, it's okay, but there is still a time. There is a kitchen time. Right? And once the kitchen will open, feed them. But don't feed them with the biscuits or chips or chocolates in between. Otherwise they'll fill their stomach, and they know how to blackmail the mothers also. Yeah. True. Mothers I or think whatsoever. ये हमारी इंडियन मॉम्स के लिए वैसे भी ये करना अपने आप में एक अचीवमेंट होगा आई गेस. तो टेल किड कि ओके 20 मिनट्स हो गए, अब आपके हम मील्स उठा रहे हैं एंड वी आर डन फॉर दिस Yes, मील let's टाइम. do that. If we can I'm do so this, sure yes. it's gonna work because Yes. though I've not tried They it, cannot, I really want they to. cannot stay hungry. Nobody can stay hungry. True, undoubtedly. Right? Yeah. ये नहीं खाएंगे तो कुछ और तो खाएंगे. पर वो कुछ और नहीं देना है. वो Wait for कुछ- the next Definitely, meals. you're not going to give them, because that's not a meal time. So proper एक meal time हम लोग set करेंगे. True. And from the beginning they should know it. कि okay, this is a meal time, and there That's should how not we be no can actually TV. bring There the- should be, yes. बिल्कुल. That's how we can bring the discipline. Right? That's a learning stage, True. right? That's important. Yeah. So that was very one important topic, कि बच्चा जब picky eater होता ही क्यों. I think it is all made by we moms. वो हमने ही उस तरह का उसको environment दिया है कि बच्चे को आदत पड़ गई है to pick and eat and choose and Yeah, tell, true, right? कि true. मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसे नहीं, because we always feed them the other thing.
और वो जो छूट जाता है वो छूट ही जाता है, and we They tell didn't them know only कि what कि is वो a picky picky eater eater. है. Yeah, Yes. you beautifully Aziz. said it, you know, कि ये हम mothers की बनाई हुई Yes. language है. True, for our own convenience. Aziz, yes. Right. So, जैसे एक बच्चा है, right? हम जो मदर्स हैं वी हार्डली यू नो गो टू एनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कि हमारे बच्चों का एक डाइट प्लान बना दो, राइट? Right. बट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट चार्ट कि ब्रेकफास्ट में ये ज़रूर खाना, ये वाले न्यूट्रिएंट्स ज़रूर जाने चाहिए, और लंच में मे बी ये स्पेक्ट्रम होना चाहिए. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बैलेंस्ड full nutrition like diet for a kid? Okay, we don't need to go to any dietitian or nutritionist for a kid's diet. Let them eat everything the way we eat it. Well balanced diet means should be a carbs also, there should be a proteins also, there should be a vegetables, it should have a fruits, plus we should take care of the calcium, that's with the milk. So why not let them start with a nice breakfast, whatever they like. See, they are in the growing period. We shouldn't be doing it कि इतना प्रोटीन खाएंगे, इतना ये देना है. ग्रोइंग पीरियड है. 5 years का रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ 10. राइट. स्टार्टिंग में अभी वो डेवलप कर रहे हैं अपना टेस्ट, सो देन दे शुड नो इट कि ओके जो भी घर पे बनता है आप दीजिए. आप पराठा दे सकते हो, आप सैंडविच दे सकते हैं, राइट. दे फॉन्ड ऑफ सम कुछ भी मिल्क के साथ आप कोई पिन्नी दे सकते हैं अगर विंटर सीजन So है. the breakfast could be the carb heavy. Yeah, we can do that. They have Yeah. to go to the school, they consume it. Why we have to tell them that this is heavy, this is not, until unless they are not facing any health issues, Right. right? So वही light and heavy भी concept हमारे mind का makeup light है. and heavy, yeah. If they're digesting well, if they're moving well, if they're playing so much, they will be able to digest it. Right. Why we have to tell them that this is a carb, this is a protein, let them Why? eat them, let them Initial develop the merely, taste. yeah. Yes. Once they start growing up Yeah. and then they are seeing some kind of an issues, then we will see कि okay what we have to make the changes, right? कुछ भी खिलाओ, दाल की रोटी खिला दीजिए, चीला खिलाओ, सूजी का उपमा खिला दो, उत्पम खिला दो. Right. Then coming in the mid mornings, you can introduce rainbow platter एक बना दीजिए आप fruits का, Nice. right? In the same way जैसे उनको आप proper salad introduce करो, So बच्चों को cut तो them into mixed fruits shapes. दे सकते हैं, right? बच्चों को बिल्कुल आप दे सकते हो. Otherwise we always tell the adults कि okay have one fruit at a time, See, right? because we check our weight. Yes. Right. In case we have to check our weights, then we always say the concept is different. Yeah. So that time we say, okay, just eat one fruit so that your glycemic index should not mix. Right. For the children, we don't need to do this. Let them have a rainbow platter. Right. Right. They can have a 2 to 3 fruits, whatever they like it. Let them eat. Or maybe then in the afternoon, the way we eat our dal, roti, sabji, or rice, or rajma, or the chanas. Yes, let them introduce Proteins salads and also. Salads. Right. So could be the heavy मतलब chanas and the in yes. the lunch sort Yeah, of time. yeah, we can give them, Yeah. right? So then we know about it. By the time they get up again, or maybe not getting up after the coachings, they're hungry again. We Yeah. can give them some night snack. The snack can be something like a paneer ki tikki, can be some sprouts ka tikki, or maybe the sprouts. I don't think so. The children like in the same way. Yeah, They do take their milk. I'm packing that sprouts, me crushing it and putting the atta and making roti out Yeah, of it. maybe the roti, make a patty out of it. Yeah. Right, Because we they're can more make of them. pronti bachas, so we're Huh. like, yeah. So we can do all those things, right? Yeah. So we have to be a little more creative that Yes, time. true. Okay, maybe that time they like their bread, or maybe they like something like in the besan. We can do that. And Yeah. at the night time, the same way, the way we eat it. उस time पे आप कोई मखाना का चाट वगैरह खिला सकते हो, True. right? Yeah, कोई बच्चे that's a good they idea. just homemade मखाना. That's what we can do. Yeah. So simple things. घर में चने होते हैं, चने ले लो. चने ठीक की है? चाट ले लो. या पीनट है, पीनट ले लो, राइट. मखानाज है, तीनों को मिक्स कर दो. जस्ट डू डिफरेंट Any थिंग्स. sort of- यस. Yeah, salad and charts and Yeah, they can tikkis. take it. You should have it in the Yeah. evening sort of time. वो इवनिंग्स में लेके देन यू आर सॉर्टेड. देन And दे कैन then- हैव देयर डिनर्स आल्सो. So dinner should be a little lighter, or as in what? Can they have roti paratha or? डेफिनेटली दे कैन हैव लाइक उनको कोई वेट का नहीं है. तो Right. यस दे कैन डू द पराठा आल्सो इफ दे आर. कई बच्चों का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट मूविंग दैट मच. Yeah. सो इन दैट केस देन वी कैन लीव द पराठा. मतलब रोटी में तो कुछ नहीं है. Yeah. Homemade food will never make them big until unless we are not introducing the biscuit ka packet, we are not giving them a chips ka packet. True. So things like that. So it's very easy. So रात को can we also give high protein, or it should be given in the early time? See, that's what I'm talking. Kis
बच्चों के केस में हाई प्रोटीन लो प्रोटीन ये सब नहीं बातें नहीं करनी बातें चाहिए, okay. राइट, until unless they are not facing any kind of an issue. Somebody is like they are now they're in their teens and they're overweight, yes we definitely need to check Yeah. कि इनकी डाइट में क्या जा रहा है. तो आपके पास बच्चों के स्पेशली और टीन्स के स्पेशली कितने ओबेस केसेस आ रहे हैं? Okay, so basically, until unless the child is not facing any kind of issues, I don't introduce the diet thing. I always tell them ki what are the do's and the don'ts. We explain them. Okay, now the child is like growing, and especially with a girl child, when they start facing some conditions, when their periods are not coming well, you know, once they start showing signs like यहाँ पे आपका dark areas हो जाता है, right, once they start getting their acne and all and it's not under the control, then we put them can introduce diet. Into diet. Right, now the diet will be not like the restricting one. We just tell them what are the do's and the don'ts, and then we have to see what are they eating, where are they going wrong. Right. So that time then we will start doing it, because hormonal disturbances नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. Yeah, so that time we can introduce कि okay कि this is the way we should be doing it. एक pattern मिल जाता है, then they Right. know about it, then they correct it, and then we move forward. True. And do you think इन सब चीज़ में जंक काफ़ी कुछ प्ले कर रहा है रोल, या फिर जंक इनटेक कितना रह रहा है? बिकॉज वी सी पीपल, यू नो, इवन द पेरेंट्स, कि अच्छा नहीं कुछ खा रहे हो तो न्यूटेला ब्रेड खिला दो, Right. यू नो, ब्रेड लो न्यूटेला लगा हुआ है या ब्रेड जैम खिला दो. सो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी न्यूट्रिशन है, बट देन इसका It's all इफेक्ट. about the taste. Yes, effect is definitely weight. Right. Nutella आपको क्या दे रहा है? आपको उसमें एक शुगर जा रहा है आपका मोस्टली, राइट, उसके ऊपर से आप ब्रेड्स के ऊपर लगा के दे रहे हो ना, आपके कहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू तो कहीं नहीं आया. ट्रू. As a mother also we can come to know. We don't need to even go to the dietitian So कि इसमें क्या है. जब बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा और तब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, Then we देन need to see something कि why they are not eating. work on the root cause rather. Yes, we need to know कि either they are deficient, are they deficient in their iron, iron भी hemoglobin कम होगा या anemic होंगे, they don't eat food, right? Right. Or either they need to do some kind of a deworming course. So उनको how is there any particular sign that moms can get to know कि बच्चा can be anemic or So they iron become deficient? lethargic, they are not playing the way they do, they keep complaining कि they are tired, right? So these are all the signs They're when not we can eating see well as they are well. not eating well. So these Yes. so if these are the signs, they should actually get the blood tests Yes, done. they can go to their doctor. Yeah. So they can then tell them about some kind of a syrup, or then Yeah. it can. We have to go to the root cause and correct Of it. course. So how much junk should be allowed basically? Because ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ल्ड जहाँ पर इतना स्टिमुलाई है of junk, ठीक है ना, और वहाँ बच्चे बिल्कुल नहीं खाएं. So but then what kind of a balance? Moderate. It has to be moderate. What is that? Right. Okay, but like once in Moderation. a week. Once or twice a week. That's it. अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो सी इंट्रोड्यूस कौन करता है? आई ऑलवेज टेल कि दिस इज ऑल इंट्रोड्यूस बाय द पेरेंट्स. Yeah. एक की मदर ने खिलाया तो दूसरे ने भी कर दिया. True. राइट. फ्रेंच फ्राइज है, वाई कांट वी डू इट एट होम? वाई वी नीड टू गेट इट फ्रॉम आउटसाइड? Frozen वाले. Right, the frozen ones. कुछ भी है तो see we go with the convenience also, Yeah. right? So is it about the more of the convenience, or we have to introduce the good things to our children? Then we have to do a little hard work. Yeah. So अगर आप कर रहे हो तो अगर peanut spreads हैं, almond spreads हैं, we can make it at home. We can do these chutneys at home. Whole wheat burgers can done at home. All right, I'm not telling कि please get the burgers, अब वो भी घर पे बेक कीजिए. So there are lot of facilities also available. उसमें कुछ टाइप का मैदा होगा, but ठीक है, we can do that in case the children are fond of eating those kind of a things. But I always have a question कि these things are always introduced by the parents only. True. राइट, किसी भी चीज़ के लिए. सो आपको ये देखना, जंक में मॉडरेशन रखो, ट्वाइस अ वीक दैट इज़ ओके. डोंट ओवर डू विद द थिंग्स. डेफिनेटली बॉडी तो इम्बैलेंस होगा उसमें. Yeah. So junk का hormones पे भी इफेक्ट पड़ता है या ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है? श्योरली बिल्कुल पड़ता है, राइट. अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा वो सॉसी है, राइट, कैलोरीज तो उसमें ज़्यादा हो गई होगा. True. अगर आप कोई बर्गर्स भी खा रहे हो तो उसमें कैसी वाली फ्राइंग हो रही है, टिक्की की कैसी फ्राइंग हो रही है, We can't see. hardly know. We hardly know about Yeah. this. So you know, in that case definitely that's hormones तो आपके आगे जाके होंगे. Yeah. बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं, that's not like one day.
True. So you're building it from very long time. And once the body will show you कि okay कि this acne is coming or the hormones getting disbalanced, we need to check what we have done wrong in the past. Past, exactly. क्योंकि I think उसका जो direct impact है वो उसी दिन नहीं होगा. Yes, It takes it longer. takes time. And Yeah. body is beautiful. This can reverse also. Yeah. Finally, we have to take out कि okay कि these were the things. Let's take it out from the system, and you will see the changes. Yeah. Right. Amazing. So I was sharing my own example with you. I had this acne thing. So my dermat, she gave all sort of medicines. और उसके पीछे लिखा कि no sugar, Guidelines. no dairy. Yeah. Do exercise every day and हाँ. everything. So मैंने वो medicines तो नहीं ली पर वो पीछे वाला follow किया and हाँ. I was so pretty All fine, good. good to go. Yeah. Yes, yeah. So अब वो miss हो गया. It just started coming हाँ. in. Yeah. So वही I mean, so junk in moderate is like once minimum, maximum twice in the week. See, that's what we need to see, Swati. Junk आप किसको बोलते हैं? Let's check from our home only. पहले हम अपने रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं कि उसमें क्या क्या पड़ा है. आपका न्यूटेला है, अगर आपके पास फ्रूट जूसेस हैं, जैम्स हैं, सॉसेस हैं, आपकी केचप्स हैं. So where do you want to place it? Are you giving them on the daily basis? Or you are giving them like on a weekly basis, right? True. That's one thing. Then come to your kitchen. Again we can start checking it out कि आपके पास वहाँ पे कितनी प्रोसेस पड़ी है. See, we get very happy when we say there is I have a french fries. कहाँ से आ रहा है, सोर्सेज क्या हैं, those frozen ones, कबाब्स पड़े हैं, कोई फ्रेश नहीं बना हुआ, वो भी आपके सारा कुछ वहीं से बना हुआ, frozen ones. So that's what you really need to check. Then you can see कि okay, how much you have to give. I think the mother has to know. Right. It's not about the child should know. The True. mother has to know while introducing. What are we Yeah. doing? I always say people, anybody coming, let's see the kitchen. Right. Changes तो kitchen में आएंगे ना. Right. आपके ऑयल चेंज होगा, आपके केचप्स चेंज होंगे, आपकी ये बाकी सब चीज़ें चेंजेस होते हैं. Then that's how the changes start coming. True. In junk eating, so you have to start seeing from your home. पहले आप अपने रेफ्रिजरेटर को खोलो कि उसमें आपके क्या क्या पड़ा है. आपके पास न्यूटेला होता है, पीनट बटर, योर केचप्स, your fruit juices, and can't forget those frozen foods. Frozen foods and even Kellogg's and Yes, and everything. flakes. Then once you start going to the kitchen, then you can see कि yes, there are the cereals. So हम लोगों ने cereals रखे होते हैं. So my thing is कि okay कि this is actually decided by the mother. वो how much they are putting an effort, कितना आप organic and clean eating पे करते हैं. So उससे जो clean नहीं है, जो चीज़ें आपकी preserved हैं, that is called junk. True. I think ये भी एक important जो conception है ना वो clear करने वाला है कि junk is anything which is processed and done kept with preservatives. Yes, yes. That's what we really need to know. Yeah. कि अगर आप लोग अपने फ्रेंच फ्राइज या कोई भी आपकी कोई ऐसे कोई कबाब्स आ गए या कोई भी आपकी और चीज़ें ऐसे पैक्ड वाली होती हैं एंड यू कंसिडर कि नहीं हम लोग फ्रेश ही तो खा रहे हैं क्योंकि आपने फ्रेश बनाया तो वो फ्रेश नहीं हो सकता. सो विद जो आपका फ्रेश होता है कि आप उसी टाइम उसको कुक करते हो. येस वी कैन मेक फ्यू फूड्स एंड वी कैन कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर्स. True. We can do that ways, but it has to be done at home. Right. Right. So it's freshly cooked and freshly intaken. Yeah. So Yeah. that's what it's very very important in junk eating. And finally, dead foods ko you can't consider it. Of course. Yeah. Of course. So now I'm coming back to the that nutrition wala thing, especially the proteins because बच्चे grow कर रहे हैं. So especially जो vegetarian बच्चे हैं, so उनकी protein needs क्या cover हो जाती है through If yes they are eating consciously, yes, vegetarians के लिए थोड़ा सा conscious effort हमें करना पड़ता है. Right. See, 1 gram of your your 1 bowl of a katori, dal ka katori, that gives you about 6-7 grams of a protein. And rest this all about the carbs. अगर इतना भी आप ले रहे हो तो इट्स क्वाइट. बच्चों को मैंने नहीं देखा कि वो 2-2 कटोरी भर के लेते नहीं हैं. खाते हैं. राइट. सो दैट मीन्स कि वी हैव टू इंट्रोड्यूस मोर सोर्सेज. तो True. प्रोटीन में आप क्या कर सकते हो, आप उनको बेसन का चीला दे सकते हो, कोई दाल का चीला बना के आप दे सकते हो. मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रेकफास्ट और द स्नैक टाइम. राइट. द सेम वे यू कैन डू द सत्तू. उनको कोई पनीर की चीज़ें को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ट्राई टू मेक द कॉटेज चीज़ एट होम ओनली. यू कैन Yeah. मेक दोज पनीर्स एंड वट एवर द वाटर that becomes like whey, you can use all those things in a Wow. different way. That Right. is Rather than just wasting it, use that water, maybe
पुट इट इन योर सूप्स, विंटर्स हैं तो सूप कर लो, समर्स हैं तो आटा that बना जो लीजिए. जो पनीर का पानी होता है आप उसी Yeah, की बात कर रहे हो. yeah. We can use जैसे it हम in घर पे soups as बनाते well. हैं. Yeah. Yeah, we all Punjabis make Make paneer at paneer home at only. home. Yeah, true. Right, and use those waters. So that is your way. Wow. Right, so we can use all those things. So have like there are so many protein sources for even vegetarian. So let's do that. So क्या वो needs meat हो जाती है जो Of चाहिए course, होती है? yes, definitely. At the end of the day, ऐसा नहीं होता कि हम वेजिटेरियन है तो हमारी बिल्कुल नहीं होगी. Yes, you need to put a little conscious effort. आप डेली अपनी डाइट में थोड़े से स्प्राउट्स डाल दो, मिक्स ऑफ स्प्राउट्स डालो. बच्चे नहीं खाते हैं तो उसकी टिक्की बना दो, उसका चीला बना दो, उसकी पैटी में आप उसको फ्लैट करके दे दो. Then there are the rajmas also. So Black chane. yeah, kala chanas are such a beautiful source. Roasted chanas बच्चों को आप दो. Roasted chanas, Roasted then आजकल तो सत्तू is so much there. सत्तू को हम बहुत different ways से दे सकते यूज़ हैं. कर right? सकते हो आप, ड्रिंक्स में यूज़ कर लो उसको, रोटी में आप Mix यूज़ कर कर दो. सकते हो. राइट, थर्ड आप उसके चीला बना सकते हो. Wow. सो कोई भी चीज़ है, यस थोड़ा सा चीलास वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, बट दैट्स सच अ हेल्दी वे. येलो दाल की आप पैटी बना सकते हो. सो Yeah. वंस यू स्टार्ट मेकिंग द पैटी आउट ऑफ इट रादर देन यूजिंग द ब्रेड्स, तो True. यू हैव चेंज इट. आपने ब्रेड डाला, ये ब्रेड के साथ आपने सॉरी पहले आपने दाल डाल के एंड उसके अंदर फिलिंग ऑफ पनीर कर दिया. तो यू कैन मेक अ पैटी आउट ऑफ इट. पैटी मेकर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है. Yeah, बिल्कुल. That's what But we then can do that is it. fine. That's Yeah. doable है वो Yeah. काफी. सत्तू का अगर पाउडर ले रहे हो, वो आप जैसे बच्चे मिल्क शेक लेते हैं या लस्सी लेते हैं, कोई बटर मिल्क लिया, उसमें आप एक स्पून डालो, उसमें आप डाल के दे Oh, सकते nice. हो. लस्सी में एक चम्मच Yeah, सत्तू डाल वो दिया. उसको आप डाल के दे सकते हो. True. So throughout the day, so then nobody can be Right, deficient. because I was finding it, difficult because I am vegetarian though, so my kids, वो by default vegetarian कर ले रहे हैं. So I personally ऐसा नहीं कि उनको because मैं friends को बोलती हूँ please जब भी बनता है non-veg उनको खिलाओ. Right. Yeah, there's हाँ. nothing of that sort, but I don't make myself. हाँ. So then, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर रोज़ पनीर निकाल रही हूँ, पनीर से बोर हो जाएगा. Right. So then there's so many other options you just mentioned. Of course, we can use आप sprouts को use करना है. Sprouts. One sprout, ठीक है. नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं है हम लोगों ने, ठीक. I know. हाँ. I think मेरे को ना वो subconsciously एक डाइट चार्ट बन रहा है बन बड़ा रहा अच्छा. एक आप सबसे पहले स्प्राउट्स पे आ गए, आपके पास काला चना हो गया, देन यू हैव अ सत्तू हो गया आपके Yeah, पास. true. जिनके लिए सोया ठीक होता है तो आई गिव Yeah, देम अ like सोया soya, आल्सो. yeah, राइट, right. तो दाल्स तो आपके पास है ही है. True. सो एनीथिंग यू कैन इंट्रोड्यूस इट, आप खा सकते हो इसको आराम से. आप Yeah, खा because I think when we last met, उस दिन से अब तक मेरे घर में वो पनीर के पानी का ही आटा गूंथते हैं हम लोग. I'm so happy about this. Yeah. That And- small changes that really matters. True. Yes. Right? I think ये बहुत छोटा सा चेंज था, but I think एक अंदर से एक सेंस ऑफ बड़ी Satisfaction. satisfaction आती है कि nice The child is eating right. Yeah. And there is no artificial protein. We don't need Exactly. anything else. Yeah. Right now, True. there are so many researches coming. कि all these things are not like really great. So Yeah. let's just fix to our natural resources. True. Hmm. Yeah, because we came just in our vicinity, we got to know is a 21-year-old boy Mhm. who lost both of the kidneys Oh. because he was taking high of that Protein protein powders powders because and must wasn't be into muscle hydrating building. well. Because protein Yes. powders, they really soak your water in, तो वो Hey. पानी नहीं पी रहा था See, बच्चा. nobody tells them this thing ना कि okay with the Just like, protein, if you're just- taking a lot of protein, with that you need to drink a lot of water. कितनी important अदरवाइज बात है. वही आपकी accumulations पे आ जाते हैं. दिस कैन गिव यू एक्ने एंड फॉर एडल्ट्स जिसके गट वीक है वो वैसे प्रोटीन्स नहीं ले सकता. True. दैट्स हाउ द डाइट स्टार्ट गोइंग रॉन्ग. दैट्स व्हाई देयर आर द इंडिविजुअल डाइट प्लान्स. Exactly. तभी वो यूनिक एंड टेलर्ड मेड प्लान्स होते हैं. वेल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, आप अच्छा प्रोटीन ले सकते हो. किसी का नहीं अच्छा है या स्टमक एसिड्स लो हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक इट. True. And we were like कि it's a very small mistake कि बच्चा पानी कम पी रहा है, but उसकी वो तो कितना बड़ा kidneys उसको पे प्राइस आया. पे आ गया, True, true. सिमिलरली जैसे हमने अभी प्रोटीन्स की बात करी, आयरन इनटेक का भी कैसा रहना चाहिए. एंड बिकॉज हमारी इंडियन डाइट्स में हमारा वो कार्ब्स और रोटी जो सब्जी है उसमें आयरन हर चीज़ में नहीं होता. सो हाउ आयरन शुड बी मेंटेन. इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक आयरन एवरी डे? ओके, सो आयरन अगर जब तक आपका डेफिशिएंसी नहीं है, सप्लीमेंट्स लेने का नहीं ज़रूरत होती है. ओके. राइट, वी शुड नॉट बी डूइंग इट. ओके, इफ समबडी इज, आप अपने फिग्स ले सकते हो, नट्स ले लो,
यूज़ एन आयरन कास्ट के जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, Utensils. आप उसमें अपनी कुकिंग कीजिए. Right. मेक दो स्मॉल चेंजेस. आयरन सबको नहीं अगर सूट किया तो Okay, वो भी है कि वो सबको suit कॉन्स्टिपेशन हो नहीं कर सकता है, कभी डायरिया हो जाता है, Right. राइट. Yeah. सो देन व्हाई डोंट वी डू इट इन द नेचुरल फॉर्म्स. बीटरूट लो, आप बीटरूट का बहुत आयरन कम है, तब आप जूस इसका ले सकते हो. बीटरूट, Right. अनार एंड कैरेट को मिक्स करके आप ले लो. Right. ईट एन एप्पल एवरी डे. इफ यू आर ईटिंग योर फिग्स और रेजिन्स एवरी डे, यू कांट बी डेफिशिएंट. Yeah, because very ये तो simple. every We are not day eating- take- yeah. I Right? So think you can't be figs is- deficient. So you it's cannot- very very easy and you can do it on the daily basis. True. राइट. काले चने खा लीजिए, काले चने का सूप पी लीजिए. सो वो भी आपके आयन है. एंड आप अपने वेजिटेबल्स को इग्नोर नहीं करो. Right. राइट. व्हेन वी आर इग्नोरिंग आवर वेजिटेबल एंड It's like फ्रूट्स, green leafy, it's like spinach has good टोटली iron. दे आर फुल ऑफ इट. Yeah. स्पिनच का सूप हो गया. स्पिनच को आप ग्रेट करके और मे बी उसकी ग्रेवी बना के देन यू कैन पुट इट इन द रोटी. Pasta as well. जब ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव द क्वालिटी टू द फूड. Yeah. Interesting, yeah. Because I always felt, कभी कभी पालक बनता है ना, हर रोज नहीं बनता. Like सिर्फ आज क्या आयरन हर रोज कैसे जाएगा, एक दिन That पालक का is- पनीर, then we can do it in the roti, Yeah. right? Third day we can use something like in the beets, Beets, yeah. right? Beetroot वगैरह आप use करो, कभी आप काला चना use करो. Right. Why we have to go with just a one source? Yes. So that's how I did, आज बीटरूट बना लेते हैं, then spinach हो जाएगा, then काला चना आप is सब fixed कुछ अगर Saturday. बैलेंस वे से खा रहे हो, Yeah. दाल खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, anyways that's a natural balanced diet. Yeah, it's like at times we हाँ. really ponder हाँ. much, but then of course Then we don't we're more really think aware, about yeah. it. Yes, because अभी जैसा discussion हुआ ना, now the things are very clear for me. कि ऐसे ऐसे करके we can do it. Okay, if नहीं भी कुछ सब्जी में ऐसा बना, you can always take भीगे हुए figs. आप you कर can- सकते हो. Yes. Of course. या काले चने वैसे ही जो भुने दे दो. हुए होते हैं. आप उनको खेलते खेलते बच्चे तो खा लेते हैं. खा लेते हैं. Yes. Right. Interesting. Yeah. Yeah. आजकल मल्टीविटामिन्स जो है उसका बहुत ज़्यादा चल रहा है, गमीज का, every brand, lot of brands and lot of influencers are promoting it, and personally I really don't have much clear picture about it कि वो खाने देने चाहिए बच्चों को, इनकी ज़रूरत है कि नहीं. See, when we are talking about gummies, they are more of the sugars and the less of the rest of the things. Okay. Right? Gummies is a name, is very clear. Then second is multivitamin आपको देने क्यों है? My question is that why you need to give them? Until unless they are not deficient, you don't need to give them a multivitamin. Right? If they're eating right, we don't really need to give them those extra things. हमें कोई चीज़ ओवर भी नहीं करनी है सिस्टम में. Right? Then parents also जैसे discussion अगर होता है ना, जैसे कि खाना कौन सा एकदम प्योर है, there's so many. Let's change that now. Let's go for the sources. Right? Sources are very important. If everybody will demand, Right. don't you feel it? We will get it. Of course. So that's the way we have to do it. So I Let's demand for the right Organic. thing. We don't need the multivitamins, but we need the right food. If you True. know about it कि ये organic है, ये बिल्कुल ठीक source से आ रहा है, isn't it? You will promote them too. Of course. This is Right. beautiful, no? Yeah. Don't go for No, those no. gummies, rather go for Why? something Why organic we have to go sourcing. with it? Yeah. आपने खाया है multivitamins? मैंने अपने personally- बचपन में नहीं. हमने खाया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए हैं, हमें नहीं मिले हैं. नहीं. Why we have to introduce the multivitamin to our children? That's what I'm telling you. That's a dialogue we get Let's to just hear. sit with them. If they're eating right, then there is no need of the multivitamins. But then वही अगर if the kid is not eating well, they should consult their doctor first and then eat, Then we rather should than do mamas it. just कि वो we should order not. करके रख लिया and No, then no, keep no. giving it to them. No, हमें कोई भी चीज़ ओवर भी नहीं करना उनके सिस्टम Yeah, में. वो शायद ओवरलोडिंग उनको भी तो हो जाएगा ना. Yeah, because I think वो शायद टॉक्सिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे आपको. okay. Then you need to detox them. So we moms, we are really worried, at times ये कोविड से ये बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, immunity booster sort of thing, कि immunity के पे काम करना चाहिए. क्या हमारी जो balanced diet के होते हुए, is there something special we need to do as immunity boosting things? Okay, first I wanted to know कि okay, what do we mean by that? Immunity booster. True. One is कि okay, there are some season allergens की coming. उस टाइम पे कई बच्चों को स्नीजिंग होती है, कोल्ड कॉफ ज़्यादा हो जाता है. दैट टाइम येस वी कैन डू दैट.
राइट आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आई कैन शेयर द रेसिपी वी कैन डू दैट हमारे यहाँ पे गिलोई आती है आमलाज आते हैं आमलाज एंड गिलोई एंड प्लस यू कैन जस्ट मिक्स विद द हनी इट बिकम like something like a chavanprash they Nice. can eat on the daily basis so Right. that can be an immunity booster if person is the right weight and they're eating right they are eating their सैलड्स खा रहे हो तो उसके ऊपर आपके हम लोगों ने लेमन डाला होता है या ऑरेंजेस खा रहे हैं तो विटामिन सी भी आपका कंप्लीट हो जाता है True. राइट यू डोंट नीड टू हैव लाइक दोज एक्स्ट्रास विटामिन सी का टैबलेट्स अगर नहीं कुछ हो रहा तो हम लोग नींबू पानी पी लेते हैं लेमनेड ले लेते हैं दैट ऑल्सो गिव अस इनफ ऑफ इट राइट रेस्ट इज कि कुछ एक्स्ट्रा करना है येस वी कैन डू समथिंग लाइक दीज होममेड च्यवनप्राश दैट्स व्हाट वी कैन डू इट Right. right so this is like they really help otherwise I do give an immunity booster ka powder ka recipe which I can share at the end so people can just note it out note Yeah. it down and can start giving it to the children it really helps Nice. right So there's this something like superfood sort of concept for The- kids. superfood when they're eating everything सुपर फूड हर एक चीज़ एक सुपर फूड होता है एक सुपर फूड का हम जब लेबल लगा देते हैं तो उस लेबल के अंडर सब कुछ चीज़ सेफ हो जाती है लाइक वी टेल कि मोरिंगा इज सुपर फूड नाउ दीज डेज द गूंद कतीरा इज अ सुपर फूड Yeah. मिलेट इज अ सुपर फूड Yeah. राइट सो जो भी हम लोगों ने एक चीज़ को किसी को पॉपुलर करना होता है सो वी ऑलवेज टेल इट्स अ सुपर फूड वही that's See- what I asked कि concept होता भी है. so all those things which has to be like consumed on a daily basis उसको आप अपनी डाइट में डालो so then the name things कि okay these things have a lot of benefits to your health and introduced on your daily basis that is called it's a superfood Right. राइट सो इन सब चीज़ों का आप कर सकते हो जैसे गोंद कतीरा है सो विच आर मदर्स यूज टू गिव इन course. बिटवीन हमने नहीं देखा Yes. फिर उसके बाद से नाउ दिस इज अगेन स्टार्ट Coming गेटिंग back, yes. क्वाइट अ लाइमलाइट Yes, राइट मैंने अभी- पहले वो चिया सीड्स को करते थे हम लोग तुलसी और बेसिल्स को नहीं हमने किया एंड Right. देन नाउ द गोंद कतीरा इज द वन थिंग And just so come back. have that Got the this is popularity sattu- back. all the popularity is back Yeah. right in the same way isn't it sattu is like such an old thing Yeah. now it is coming in the packets now once it is folded in the packets now the people are just loving it because this is a superfood Superfood. so that's what your local foods are your best foods and the local foods because they give us such a health benefit so then they become a superfood the superfood of Punjab Right. जहाँ पे इतनी गर्मी है Of course. so then we have all these foods are like the superfoods Right. You know, just few days before my daughter was saying कि मुझे jelly खानी है मम्मा. right You know, and then how that is like, I have some amazing else. jelly, you know, and that sparkling jelly, उसको water में, and then you know, I made it a point कि उसके साथ पानी में डाला उसको जब देखा, wow, mom, it has grown like that. Yeah, I was like, now we'll put it in your, you know, I your know. milkshake. You know, that's it. When you start involving them in your kitchen, on your daily things, Yes. right? Then they know about it, how to Yeah. do it. Okay, ये नहीं खाना. It's nothing like it's not a one day effort. आज मना कर दिया तो कल नहीं It है. has it's a lifestyle change. Yes, it's a lifestyle change. Yeah. It's the way of living. It's the daily basis. So when they know it कि तो sauces is आप घर पे बना रहे हो कुछ भी है आपके spreads घर पे बन रहे हैं how can you go wrong? Why do you need a multivitamin? Why do you need an extra immunity boosters? कोई problem है? Yes, that can be sorted. Then we need to introduce few something extra. We can do that. Right. Yeah, that's how what you know. वही मुझे चाहिए था कि is it something which we need to give it on you know some particular pattern or daily basis sort of thing immunity booster if it's like कि हाँ अगर बच्चा एक particular season या change आप पे कुछ अपनी रोटी पे behave स्प्रेड लगा दो आप उसके अंदर अपने कबाब्स को डाल दो वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन तो कोई भी आप चने का कबाब या लोबिया का कबाब बना के आप उसमें डाल देते हो रोटी में एक स्प्रेड भी घर पे बना हुआ है वेयर विल यू गो रॉन्ग यू कैन नॉट गो रॉन्ग True. Interesting, no? Right. Yeah, thank you. It was a good take home for me too, you know, कि for me मतलब बहुत सारे हैं, it's not just this, yeah. we all mothers you know Yeah. उसी को काठी रोल में बना दे you have to play with the food you have to know बच्चे हैं तो they like shapes they don't like the roti on the daily basis Yeah. आज उसी का कबाब बना दिया आप रोटी का पिज्ज़ा बना लो in different shapes में आप कर सकते हो different colors लगा दो then they like doing all these things वही. it's not possible कि हमारा बच्चा ये भी नहीं खाता ये भी नहीं खाता ये भी नहीं खाता then we have to check on ourselves कि where I am going wrong True. I think we can do a quick sort of a, you know, rapid fire sort of thing. जो एक
सबसे ज़्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. Yeah, that will be interesting. Yeah. 5 न्यूट्रिशियस समर ड्रिंक्स, जैसे आजकल बहुत गर्मी है, बच्चों को देने के लिए समर ड्रिंक्स. आपकी छाछ, homemade छाछ. या Then your आम पन्ना, आम पन्ना, your milk juice again. We Milk can का have it. juice, ये Milk पता का नहीं juice. बच्चे को That's try what ही नहीं it कराया, is. I think. तो किसी फॉर्म में 1 स्पून डाल के उनकी छाछ वगैरह में डाल के दे दो, नहीं अगर ले रहे. Okay. All these are your summer foods only. Right. Right. Then we can't forget our old favorite is your lemon. Sugar, Right. yeah. शिकंजवी. Yeah. And the 5th is infused water लीजिए. बच्चे ऐसे पानी नहीं पीते हैं तो उनको तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो let them carry their transparent Yeah. bottles and They you would can like put their something. colourful things Yeah, उसमें, you all can the put a mint fruits. or something like that, or maybe the sugar cane. Sugar cane is also good. Sugar cane को juice आप बीच में दो. Not Yeah. हाँ ना daily basis पे नहीं देना, तो बीच में आप दे सकते हो. If they're all clean, you can give them that too. Nice. 3 healthy ways to consume milk, because हम अगर Bournvita और Horlicks No avoid करना चाहें. Bournvitas. Yes, definitely there should not be any Bournvitas. Use your fruits. You can make a fruit shake. Right. Right. आप अपना मैंगो शेक, ब्लूबेरी शेक्स, कुछ भी आप उसको कर सकते हो. इन दीज डेज द चिल्ड्रन दे रियली लाइक अ स्मूदी बोल्स, तो आप उनको एक बोल्स में इंट्रोड्यूस करके दे दो. Nice. राइट, उसको आप कर सकते हो. एंड थर्ड इज आई रियली लाइक दिस वे कि आप अपने नट्स ले लो, हैंडफुल ऑफ नट्स लो, ओवरनाइट सो कर लो, इसी में थोड़े पॉपी सीड्स वगैरह भी आप डाल दो. Right. राइट, एंड देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग यू कैन जस्ट मिक्स इट इन द कोल्ड मिल्क. राइट, उसको आप शेक बना के पूरा एक नटी मिल्क बन जाता है. So that's Right. like, it's yummy, it's interesting, and children they generally like this. Wow. मुंह में भी नहीं आते, nuts भी नहीं आते. We are Right. sorted for the day कि बच्चे ने ये नहीं खाया, ऐसा नहीं खाया, तो पूरे दिन के nuts भी चले जाते हैं. Nutty milk is again a Yeah, good idea. nutty milk, that's what you can Soaked try. it, yeah, समझ आता Yes. soaked हो गया. Yeah. Nice. So another is, how much sugar is too much for the kids? Why we have to give that white sugar? Let's replace that. We can give them a good shakkar or maybe a little bit of a sugar, white sugar, a little bit of it. Right. किसी भी चीज़ को अगर कुछ करना है तो आप डेट्स यूज़ कर सकते हो. Right. आप डेट्स का सिरप यूज़ कर सकते हो, शक्कर को यूज़ कर लो, गुड़ को यूज़ कर लो. Sugar is in jaggery. Yeah, So- that's so jaggery. is it That's what good? you can. Yeah, is it Yeah, you fine? can Yeah. have it, but again, don't do a lot of it. Keep it in the moderation while the sugar is a sugar. We were talking about sourcing, right? और बहुत सी जगह पे काउ मिल्क के सोर्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है ना, कि वो कितना सही है और वो उसमें हॉर्मोन्स है. सो एनी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर काउज मिल्क? See, first, let's again, we should have that farmers market where we can get that A2 milk, A2 milk. right? हम लोगों ने वो पिया था, उसके बाद में जो काउज आए, दैट्स लाइक फॉरेन का काउज आया जिससे हार्मोन्स हमें मिलने स्टार्ट हुए, एंड दे वर नॉट एलर्जिंग टू दैट. वी कैन गिव देम अ नट मिल्क. The homemade ones, almond milk, cashew Homemade, milk. yes. We do get the packets one also. So we can do the बहुत टाइप के बनते हैं. आमंड मिल्क होता है, आउट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क होता है. So there are variety of the milks now. हाँ. Right. So what is the requirement? What we have to give them? So we can So try it accordingly. So should we introduce it normally, or we can even only do it if काउ मिल्क अच्छा नहीं मिल रहा है या फिर बच्चे को एलर्जी है काउज मिल्क से, तभी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? सिर्फ तभी आप इंट्रोड्यूस करवाइए. अनटिल एंड अनलेस रिक्वायरमेंट नहीं है, Okay. राइट, तब आप क्यों उसको चेंज कर रहे हो? सोर्सेज को ठीक करेंगे तो वो भी हो जाएंगे, उनके विटामिन डीज भी तब बेटर रहेंगे. 3 healthy ways to meet that sweet tooth cravings. जो बच्चा कहते हैं मम्मा मीठा खाना है, तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हेल्दी हैं. ओके, एज सिंपल एज घर का बना हुआ हलवा. Right? राइट, आप जैगरी के साथ और अपने Yeah. अच्छा देसी घी के साथ आपका हलवा. Yeah. समर्स हैं तो आप अपने लॉलीज बनाइए फ्रूट्स के. Fruit popsicles, yes. Right, they are so They good, love they to make it loved it. themselves, Yes, yeah. they love making it also. Yeah. राइट. अगर विंटर्स हैं, अगेन यू कैन ट्राई डेट्स के साथ. हम लोग बेसिकली बच्चों के लिए बना के देते होते हैं एक स्वीट जैसा डेट बॉल्स. Yeah. राइट, वी कैन गिव देम दैट टू. Yeah. तब आप, एंड देन वी कांट फॉरगेट आवर कस्टर्ड्स जो हम लोग घर पे बनाते हैं, होममेड मैंगो कस्टर्ड्स. राइट, Are they custard? They are good. या They're वो healthy. बना सकते हो आप. मखाना Yeah. की खीर बना लीजिए. सर द कस्टर्ड इज बेसिकली वी मेक देम थिक. Yeah. तो आप मखाना वगैरह के साथ कर लो, मैंगो मखाना की खीर बना लो आप, राइस की Yeah. खीर बना सकते हो. सो that's what we even used to have it. Yeah. So we can have all those things. True.
And should kids go gluten free, as in, or should we like introduce all sort of millets, amaranth, and everything, and focus less on basic atta? Not really. Why they have to be gluten free, right? Why they have to be on a low carb? Yeah, we can introduce amaranth. That's a good one. Ragi is good. Millets are good. We can introduce the different foods, but why to say no to the gluten? Gluten is not a culprit, anyways. Right? Okay, Until because unless there is no requirement, and until unless somebody is not like allergic to this, it's okay to take gluten. Totally okay. so there's no, because there's so much of propaganda and discussions around gluten. Go gluten free. No. But आई एम नेवर अगेंस्ट इट. हम लोग जिस चीज़ को हमेशा खा के बड़े हुए हैं, आपके सोर्सेज ठीक हो, आप हमेशा ले सकते हो. सो देर इज़ नथिंग लाइक गो ग्लूटेन फ्री. oh my god, thank you. Because I think there's so many things for me to take home, and because बहुत सारे myths थे. And any particular myth you've come across कि parents generally they come up with that particular notion, which is a big something, it has to be changed. When they're growing up, I feel every parent has like, they have a lot of questions क्योंकि ये नहीं खा रहे हैं तो क्या करना है. जैसे ग्लूटेन से कुछ हो ना जाए या मिल्क से कुछ हो ना जाए. पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए. आई थिंक जस्ट इंट्रोड्यूस द राइट थिंग्स in the right way. That right attitude of a parent is very important. Yeah, I think that's the game in everything for that matter. Yeah. So that right That's the game of attitude is- parenting, the whole every sense, I Yeah. guess. We shouldn't panic much. Yes. There is nothing. The children, if they're not eating it also, that's okay. Let's respect. Let's see for how long they are not eating. Then we can see, okay, what's there, Yeah. right? Interesting. I think I had my all questions you'd written, Yeah. it been answered and cleared. There's so many things which, I've been in my mind. And one last thing I think I just think I've not covered as yet, especially the kids who are into sports, who are, they are doing some extra sports activity, can be any, and doing a lot of workout. Because we talked about obese, we talked about, less deficient, all sort of. But what about those kids? What sort of requirements they have? Some extra requirements definitely in terms of their proteins and in terms of their multivitamins. Then we can give them some extra proteins, extra care on that, extra calcium, extra iron, extra proteins surely. So definitely the requirements become different. So should they consult, because generally it's said when kids is in sport, you should consult some diet expert so that they can always. That time I would say yes. Yeah. Because when I take a sports nutrition children and we are into the sports nutrition, and when they are coming with the child, first I always say is the child is very deficient in their calcium and vitamin D, so which is not at all complimentary. How they are playing, I don't know about it. course. So first we start with that, and then we are like introduce the other things. True. And the hydration is very, very important for those kind of a children. When they are playing, they really need to have a good electrolyte balances. Yeah. So those kind of the things, yes, if there is some extra requirement, we can always consult our nutritionist at that point. Yeah, you know what, हम जितनी बात कर रहे हैं उतने क्वेश्चंस और निकल रहे हैं. True. So आपने इलेक्ट्रोलाइट बोला, इज लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं नेचुरल वाले, वो भी तो वो होते हैं. इट्स लाइक इट गो ऑन एंड ऑन. या We shouldn't be making something like the diet ko itna panic. I have like seen the children, those who used to come to me under the pressure of their mothers, and they have reduced the weight, and now they have reduced so much of a weight, they become like androxic also, and they don't want to eat the food. Now they are the ones, those who are standing on the scale every day. Now the mothers are getting ki ma'am, see, now this child is not eating anything. I always have this, who have done this. it's just that the basic crux, I've always interacted with you, and the big learning is like who is basically, what is the root cause, कि हम पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं रूट कॉज बनते हैं वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने में, वो अपने We just need to comfort have और a more convenience patience. देखने में. Yes, no comfort in that. Yeah. Introduce them to the vegetables. आपने artificial fruits में क्यों या आपने करना, seasonal fruits दे दो, very very simple, right?
आपने आर्टिफिशियल जूसेस में क्यों इंट्रोड्यूस करना बच्चों को? फ्रेश जूसेस दे मैं दीजिए। कुछ करना तो फ्रेश जूस दे दो, अगर रिक्वायरमेंट है तो व्हाई नॉट, दे दो आप. और फ्रेश जूस क्या देना चाहिए कि सिर्फ फ्रूट्स खा ले तो दैट्स गुड इनफ? I would always say is the fruits are basically they are the best one, जिसके साथ आप फाइबर भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो. Right. You just talked about it. कोई एनीमिक है, अगर कोई एनीमिक है यस, तब उनको बीट रूट वगैरह का जूस दे देंगे हम लोग. सो यू नो यहाँ मेरी लड़ाई है मेरे घर पे, यू नो दे लाइक कि बच्चा स्कूल से आता है, मुझे होता है मैं एक एप्पल काट के खिला दूँ, तो वो कहते हैं नहीं नहीं जूस निकालते हैं, उसमें देख इतनी सारी मौसमी चलेगी ना. सो देन इज लाइक बिकॉज मुझे नहीं पता हु इज़ राइट ऑनेस्टली. सो Right. व्हाट इज़ दैट राइट थिंग कि एक फ्रूट खिलाना इज़ गुड थिंग या फिर एक सी आप देखिए उसमें आप अगर आप फ्रूट खिला रहे हो, आप उसके साथ फाइबर जा रहा है, उसके साथ शुगर जा रही है. आपने अगर जूस बना दिया तो उसका फाइबर तो सारा माइनस होगा, या राइट. फाइबर माइनस हो गया और उसके बाद आप ज़्यादा शुगर दे रहे हैं. So I would suggest it कि I would like to go with the fruits first. Let them chew, let them enjoy, या rather than just giving just that the fruit juice that give you that instant energy. Definitely. And I think I am Right. basically a fruit lover. So हाँ. when that fruit gets crushed, my heart breaks. It's like it's like मुझसे देखा नहीं जाता fruit का जब murder हो रहा होता है. I really like that. They're so beautiful and हाँ. fleshy, you And know. all their colors, let them see that, let them Exactly. pick. So those kind of a things. Yeah. So हाँ. anybody you know abroad में जितने friends हैं, हम Right. तेरे लिए क्या लेंगे? वो बड़े-बड़े सुंदर से fruits ले आओ Fruits ले यार. Yeah. Yeah, but Yeah. then all in all, ma'am, I must say thank you so much. It was very, very insightful. A lot of questions we moms we generally have, but we are not so sure about those questions कि इसका क्या correct way है. And then of course वो जो अंदर अपने आप में भी करेक्ट करके एक यू नो एक इंट्रोस्पेक्शन करना कि हम कहाँ पर करेक्ट है और कहाँ पर नहीं है. All those things are very good take homes. So I would, and आज जो था ये you know we all are sweating and visualized and still you were like कि हमने तो आज करना ही है. So thank you so much. I think my words would not suffice for whatever environment maybe you have been able to sit here and for all the audience for the I'm sure this podcast जो हमने करना होता है वो कर ही लेते हैं, are राइट. true. तो उसमें कुछ इतना से ये छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस नहीं डिस्टर्ब करते. Thank you. I mean that is something commendable and inspiring. Thank you. And Yeah. okay, thank you.